Hello students, this video is for grade 2nd. Let us start. In this sheet, we will learn about three different subjects: English, Maths and EVS. We will learn about three different subjects: English, EVS and Maths. So let's start with Maths. In the first question of Maths, what we have to do is write the number which comes between the given number. Okay, you can see before and after. Okay, two numbers are given, before and after. दो कॉलम दिए हुए हैं जिनमें अलग अलग numbers given है, before और after. And what we have to do is we have to fill what comes in between. Okay, हमें fill करना है कि between में क्या आएगा. So which number comes before 106 and after 108? ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहले 106 आता है और उसके बाद 108 आता है? मीन्स 106 के बाद और 108 के पहले कौन सा नंबर आता है? Yes, 107. 107 comes in between 106 and 108. 106 और 108 के बीच में 107 आता है. In the same way, in second question, 211 comes in between 210 and 212. 210 और 212 के बीच में 211 आता है. 210 और 212 के बीच में 211 आता है. Now tell me that which number comes before 327 and after 325? Means 325 के बाद और 327 के पहले कौन सा नंबर आता है? It means 325 और 327 के बीच में क्या नंबर आता है? Yes, 326. Exactly. Very good. So in this way you have to solve this question. Now see the second one. Write the number which comes in between the given number. In this question also what you have to do is you have to do the same. इसमें भी आपको same करना है. इसमें भी आपको between write करना है कि बीच में कौन सा नंबर आएगा. 213 और 215 के बीच में क्या आएगा? 214. Yes, 214 comes in between 213 and 215. Very good. Now 410 और 412 के बीच में क्या आएगा? 411. Exactly. Very good. So in this way you have to complete this math section. What you have to do is you have to write that what comes in between. बीच में कौन सा नंबर आता है ये आपको यहाँ पे fill करना है. Okay. Now see the next section which is of English. अब हम लोग next section देखते हैं जो कि है English का. Write plural form of these following nouns. In given nouns का हमें plural form write करना है. Plural form means singular to plural. We have to change these words into plural. इन words को हमें plural में change करना है. Okay? We have to change these singular words into plural words. Okay, for changing what we do, we used to add s और es. हम क्या करते हैं इसमें वर्ड में s या फिर es का ऐड करते हैं और इन्हें प्लूरल में चेंज करते हैं. So what will be the plural form of tree? Trees. T-R-E-E-S. Trees. T-R-E-E-S.
R double E S. Trees. Ant. What will be the plural form of ant? Ants. A N T S. Ants. Now, what will be the plural form of fox? Fox का plural form क्या होगा? Foxes. F O X E S. Foxes. Very good. Now the plural form of dog, it will be dogs. D O G S. Dogs. Plural form of rabbit. Rabbit का plural form क्या होगा? Rabbits. R A double B I T. Rabbits. Okay. So in this, what we have to do is we have to write all these nouns. इन सारे nouns को हमें plural form में write करना है. Like pools, decks, donkeys, sandwiches, apples, oranges. Okay. इसी तरीके से हमें सारे nouns को plural form में convert करके यहाँ पे write करना है. Okay. Now let's take a look at noun. पहले noun क्या है? एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं about noun. What is noun? Noun is the name of person, place, thing or animal. Noun is the name of person, place, thing or animal. Noun is also known as naming word. There are three types of noun: proper noun, common noun and collective noun. Proper noun. These nouns are used for particular person, place or thing. They are specific. Proper noun particular things के लिए होते हैं, specific होते हैं. Common nouns are used for common person, place, thing. Okay. कॉमन लोगों के लिए, कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. लाइक बॉय, गर्ल, पेन, पेंसिल, टाइगर. ओके. नाउ कलेक्टिव नाउन. अ ग्रुप ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. नाउन के ग्रुप को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ओके. या so this was a little revision about noun. Now let's move to the last section of EVS. What we have to do in this, rewrite the incorrect sentence by writing the correct statement. Rewrite the incorrect statements by writing their correct statements. हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है और इनकरेक्ट को रीराइट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पर. ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये इनकरेक्ट मतलब गलत हैं. किस पे बेस्ड है ये? एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, मीन्स जानवर और उनके छोटे छोटे बच्चों पर. द बेबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड किटन. डॉग के बेबी को किटन कहते हैं? नो, डॉग के बेबी को पपी कहते हैं. द बेबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड पपी. द बेबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड अ पपी. What we will write? We will write the baby of a dog is called a puppy. Puppy. Puppy.
Now see the next. The baby of a pig is called a piggy. No, the baby of a pig is called a piglet. Piglet. The baby of a pig is called a piglet. Okay, so in this way we have to rewrite. हमें इन गलत सेंटेंस को रीराइट करके सही बनाना है. ओके, किटन की जगह पपी, पिगी की जगह पिगलेट, कब की जगह फॉन, चिकन चिकन की जगह चिकन, लैम्प की जगह लैम्ब. ओके, so in this way you have to rewrite these sentences and correct these sentences. इन statements को rewrite करके correct करना है. So this was all about today's sheet. In first question we have learned about what comes between in maths, plural form in English, and in EVS we have learned about babies and animals and their young ones. Animals and their babies. Okay, so I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt related to any subject, any question, you can ask me. Thank you.